ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को इरफान खान का इम्पैक्ट, उसकी लेगेसी, उसकी रिस्पेक्ट दिखती है। चाहे वो अवार्ड्स है जो उन्होंने जीते हों डिफरेंट कैटेगरीज में बॉलीवुड के, जो इंटरनेशनल रिकग्निशन उन्होंने गार्नर किया है, जुरासिक पार्क, स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई या फिर और भी बहुत सारी फिल्म्स में। बट पुटिंग इट ऑल असाइड, इफ यू हैव टू नैरो इट डाउन टू वन पॉइंट व्हिच शोकेसेस हिज इम्पैक्ट, लेगेसी एंड द रिगार्ड दैट पीपल हैव फॉर हिम, बाबिल खान के इंटरव्यूज देखो एंड फिर देखो उनमें कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। मतलब ही इज़ सो इमेंसली रिस्पेक्टेड कि हम लोग बाबिल खान को टॉलरेट करते हैं इंटरव्यूज़ में, वो ज्ञान देते हुए जो देता है। एज एन एक्टर एक्चुअली काफ़ी टैलेंटेड है, कला में उसका काम देखो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिसने ये इंटरव्यू दिया ना, it's so important to understand that you don't get girls, right? That statement, that is such a actually a really regressive statement. इससे मुझे दिल में दुख हुआ। तो इस लॉन्ग वाइंडेड जोक के बाद बातें बात पे इरफान खान, probably the best drama actor of his era. All time मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दिलीप कुमार still exists. The way he embodied seriousness, tension, internal grief, and just a man who is extremely deep in thought, जिसके तुम एक्सप्रेशन को देख के ही, even if it's steady, वो उतना ज़्यादा इमोट नहीं कर रहा है, तुम उसको देख के ही कह सकते हो कि ही इज़ एक्सपीरियंस्ड सम हार्श थिंग्स इन लाइफ। एंड मैं रेफरेंस कर रहा हूँ लंच बॉक्स की परफॉर्मेंस व्हेन आई से ऑल दिस, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत सारी फिल्म्स उनकी देखी है विच वी ग्रोन टू अप्रिशिएट। आई ऑनेस्टली डिडंट केयर मच फॉर हिज इंटरनेशनल वर्क, इट वॉज वॉट इट वॉज, बट ही ऑलवेज फेल्ट लाइक एन एक्सपेंडेबल कैरेक्टर इन दोज फिल्म्स। बिफोर आई कम टू द लंच बॉक्स में, तो मैं एक फिल्म के बारे में बोलता हूँ जो जिसमें इरफान खान का रोल मुझे काफ़ी पसंद है। वो है किलर। किलर का गाना बहुत सुना होगा सब लोगों ने, एक फिरता रहूं दर बदर, काफ़ी फेमस गाना है, लेकिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है क्योंकि वो सुपर हिट नहीं हुई थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आई नहीं, तब टेक वन वगैरह चैनल आते थे केबल पे, उन पे मैंने देखी थी। वो काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। ही इज़ बेसिकली प्लेइंग एन एंटी हीरो ऑफ सॉर्ट्स, जोकर टाइप, काफ़ी एंटरटेनिंग एंड थ्रेटनिंग है, लगातार इमरान हाशमी को ट्रिकी सिचुएशंस में डाल रहा होता है। तो अपार्ट फ्रॉम द लंच बॉक्स, वो पहली फिल्म है जो मेरे को माइंड में आती है व्हेनेवर आई थिंक ऑफ इरफान खान। अबव ऑल इज क्रिटिकली अक्लेम्ड वर्क। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बस कोर मेमोरी है चाइल्डहुड की। उसकी डेथ एनिवर्सरी थी रिसेंटली एंड आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे व्हेन ही पास्ड अवे, आई वाज एक्सट्रीमली सैड। ही स्टार्ड इन माय फेवरेट बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम व्हिच वाज द लंच बॉक्स एंड आई फेल्ट लाइक अ डीप कनेक्शन विद दैट। आई थिंक हॉलीवुड में जैसे टैक्सी ड्राइवर एम्बॉडी करती है लोनलीनेस को, एक्सप्लोर करती है उसके डिफरेंट फैसेट्स को, जिस तरीके से एक बंदा डिसेंड कर सकता है इनटू कंप्लीट मैडनेस, टोटल केओस, एक पॉइंट के बाद तुम्हें कंफर्टेबल भी लगता है वहाँ पे, इवन दो लोनली है, तुम्हें पता है आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट यू become so used to it that you don't want to leave it. You become fearful of what's out there. You don't want to latch on to people because of the consequences. You don't want to partake in the dealings that are required to maintain relationships, the facades that you have to put up, the lies that you have to constantly tell, and the feelings that you have to bury. मैं इसको एक lunch box review नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसमें एक dialogue जो इरफान कहता है which really resonates with me, which is, I think you forget things if you have nobody to tell them to. And that's just a beautiful dialogue. And just the way that the film ends, the way he looks at what was supposed to be his future lover, and that turns out to be a relatively younger woman. And he feels like he would deprive her of her youth, her opportunities, her beauty, if he were to pounce at that opportunity. Just the sheer guilt that he experiences in that moment prevents him from reaching out to her. And as the film progresses and we reach the end, he realizes, why not give it a shot? And then he tries to get to her and the film ends. So it is in moments such as those where we get to experience Irfan Khan at his absolute best. If you've not watched The Lunchbox, then and if you're on the fence about Irfan Khan, you don't really buy into the hype that surrounds him, just watch The Lunchbox and I'm absolutely sure that you'll come to appreciate the genius that is Irfan Khan. And lastly, to end the video, मैं एक दो फिल्म्स और मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है इरफान खान की। हैदर, उसमें उसका मेन रोल नहीं है, ऑब्वियसली कैमियो टाइप है, बट जो उसकी इंटरेक्शन है विद हैदर्स फादर इन द जेल, जस्ट एवरीथिंग दैट ही डज इन द फिल्म इज एक्सट्रीमली फ्लॉलेस। द स्क्रीन प्रेजेंस, द पावरफुल डायलॉग, द इंटेंसिटी ऑफ हिज आइज, एवरीथिंग। एंड पीकू में काफ़ी नेचुरल एक्टिंग की है। दीपिका ने सरप्राइज किया था उस फिल्म में मुझे। अमिताभ इज द गोड दैट ही इज, बट दैट्स अनदर फिल्म दैट आई रियली लाइक ऑफ हिज, नॉट द फिल्म स्पेशली बट द परफॉर्मेंस। बिल्लू बार्बर, again, constant pattern, and I don't really love his most of his films, but his performances are also something to celebrate and praise. The scene that he has with Shah Rukh Khan, where he completely outclasses him, it's an absolutely wonderful scene. It's sad that he passed away so soon. He had so much still to do. I think he was one of the first few actors who laid the foundation for what we now see, a more quality-based, content-oriented product, as opposed to just
एक्सप्लोजन्स एंड मासी सिनेमा. एंड मैं जानना चाहूँगा कि तुम लोग क्या सोचते हो उसके बारे में. तुमने उसकी कौन सी फिल्म्स देखी है. डू यू अप्रिशिएट हिम एज मच एज आई डू. एंड 1-2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक ट्रिब्यूट टाइप वीडियो बना ही लेते हैं. व्हाई नॉट. एंड दैट इज़ इट. आई विल सी यू सून. 3-4 और वीडियोज़ है प्लान्ड, तो मिलते हैं.